Okay, keep reading. Motional EMF due to rotating rod. Motional EMF due to rotating rod. Rod को मैं घुमा रहा हूँ. Okay, at that time, what is the potential difference will be there? We have to see. So we will see the, we'll calculate and we'll get the formula also. Calculate EMF across the ends of the rod. Okay. So suppose मान लो you have a magnetic field into the page. There is a rod fixed at about this end. Okay. And it is rotating about this omega. Angular velocity से घूम रहे, zoom 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 बोल के घूम रहे. Okay. Now he's asking what is the EMF across the rod. So whenever rod is in motion, definitely the EMF will be induced. Okay, that EMF ka formula is how much we have to see. That formula will be different, not BVL. Okay. Okay. Suppose मान लो, you know this formula, right? V is equal to R omega, याद है? Circular motion and circular motion में we studied linear and angular velocity का V equal to R omega. Okay. You tell me, linear velocity of the rod is same or different of this rod? When rod is rotating about the fixed end, linear velocity of the each particle will be same or different? Same है तो क्यों? Not same है तो क्यों? So the linear velocity will be different because it's rotating at an angle. Rotating हुआ तो क्या होगा? Each particle I'm talking about. Each particle का linear velocity will be same or different? Why? So it will be different due to, so if you measure a particle at half the distance, the radius is half. Good. Like So velocity if I take this particle, the small particle, okay, dx length, okay, मैं इधर से x distance दूर में dx particle लिया. इसका velocity इस formula क्या है? V equal to x omega. If I take this particle, x is decreasing, so therefore linear velocity will decrease. V equal to r omega, right? R is decreasing means linear velocity will be different. Even though omega of the particle is same. Okay, that's why we cannot take directly BVL बोल के we cannot take EMF का rotating rod का. Okay, so उसका वजह से हम लोग क्या करेंगे? Small particle I'm cutting dx का, we'll do integration का concept का, small dx का with velocity v x distance दूर में, and that small piece of rod का small EMF will be how much? Small EMF will be how much? देखो, this is the length, velocity and magnetic field, all are three mutually perpendicular. Okay, so length is along x-axis, velocity y direction, and z-axis में magnetic field. So all three are mutually perpendicular. Small EMF will be B V L is dx. Is dx. Now I want to convert. I want to get the total EMF, right? So total EMF के लिए आपको क्या करेंगे? Integrate करने का. Okay, I want in terms of omega. देखो B की जगह में here V equal to कितना है? X, right? X omega. So V की जगह में X omega dx. Right? I want in terms of omega. Now total EMF चाहिए. Total EMF के लिए integrate. E is equal to, from where to where you have to integrate? Tell me. When the particle is here, X is 0. When the particle is here, total length is L. तो कितना होगा? X is L. So we have to integrate from 0 to L. So when the particle is here, initially X is 0. When the particle is here, the total length is L. So we have to integrate from 0 to L. B omega x dx. Now here B and omega are constant. बाहर ले लो. EMF is equal to B omega. Limits, the integration of x is x square by 2 from 0 to L. So B omega by 2. So upper limit minus lower limit. L square minus 0. So it is B omega L square by 2 is the EMF induced across the ends of the battery. Okay. So formula क्या है? B omega L square by 2 is the formula when a rod is rotating at end only, not somewhere. End से rotate किया तो ही आपको B omega L square by 2 आएगा EMF. And which direction is positive, which direction is negative? Tell me. Suppose O and A is there.
विच डायरेक्शन इज पॉजिटिव, विच डायरेक्शन इज नेगेटिव? बैटरी का सिंबल लगाने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करना पड़ेगा. यूज करो राइट हैंड पाम रूल. देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट्स, velocity is thumb, and the palm is higher potential. This is higher potential, this is lower potential. I can write like this: EMF को VO minus VA, because this is higher potential, right? O is higher potential, this is lower potential. So how to find right hand palm rule? Magnetic field, velocity, thumb, and palm indicates the direction of the positive terminal, higher potential. VO minus VA is B omega L square by 2 is a formula. Copy. Finished, covered. ओके, क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन दिस. ये एंड से रोटेट किया तो ही यूज करने का. ओके, चलो सेकंड वन. नाउ ए बी इज अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल. एक रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में. रॉड का नाम है ए बी. ओके, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड ही is asking what is the potential difference between VB minus VC. देखो, I am rotating with the angular velocity omega. He is asking not VA minus VB. He is asking what? VB minus VC. मतलब potential difference across this चाहिए. Okay, so पहले EMF find करेंगे across this section only. I want to find, not complete wire. Complete है तो फॉर्मूला मालूम है, B omega L square by 2. बट आपको इधर से लेने का. So इंटीग्रेशन मेथड ही फॉलो करेंगे. इंटीग्रेशन मेथड ही फॉलो करेंगे to get this one. बट लिमिट्स किधर से किधर लेने का? सेम वे, अगर मैं इधर से x डिस्टेंस दूर जाके I'll cut the small element dx. I'm moving with velocity v. तो small EMF कितना होगा? Small EMF will be b v dx, right? I want in terms of omega. Same method we are following. de is equal to b. V is equal to r omega, right? R is nothing but x omega dx. So to get total EMF, we are integrating. So E is equal to B omega बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x dx. Now limits from where to where? आपको EMF किधर से किधर तक चाहिए, उधर से ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा. You want from A to B या और B to C या इधर से B to C चाहिए. So initial limits from here से what is the limits? ये कितना है? Total in this L. तो इधर तक कितना है? L by 2 से L तक. Because origin is here, it is fixed at this point, right? Rotate हो रहा है. So क्या करेंगे? L by 2 to L. Okay, now integrate. Del answer. minus 3b omega L square by 8. EMF कितना है नॉर्मली? 3 या 3 ओमेगा. इसमें ही माइनस है. It'll be minus because it's from VB to VC. हाँ, यस. ओके, सो EMF इधर कैलकुलेट करने से एक्चुअली कितना आएगा? 3b ओमेगा L स्क्वायर बाई 8. क्या आया? ओके, नाउ आई वांट व्हिच वन इज पॉजिटिव? टेल मी, Sriram, tell me. Magnetic field is inverse, velocity is ऊपर, the VC is positive, VB is negative, right? That means VC minus VB. But he's asking VB minus VC. So VB minus VC is equal to minus 3b omega L square by 8. So rod को कॉर्नर से घुमाने समय, and he's asking the EMF across the complete rod means B omega L square by 2. But anywhere means integration method से solve करने. Okay, next one. देखो, conducting rod of length 4L is rotated about point O in the uniform field into the paper OLA. Okay, ठीक है. एक magnetic field है, एक rod है of total length is 4L. Okay, 4L is a rod length. Now it is rotated about this point
with an angular velocity omega. This is L they given, and this is 3L. सेंटर मिड पॉइंट से नहीं रोटेट करूंगा, इधर से रोटेट करूंगा. ओके, नाउ आई वांट द वी ए, दिस इज नेम ले लो, ए ओ सी. ओके, नाउ यू आस्किंग वी ए माइनस वी सी इज हाउ मच? वी ए माइनस वी सी क्या करेगा? दिस इज नॉट ए एंड ऑफ द रॉड से, राइट? एंड ऑफ द रॉड से. सो थोड़ा हम लोग देखेंगे. देखो, बेटर सपोज मान लो इफ आई कट द रॉड, आई एम टेकिंग द टू सेक्शन, आई एम टेकिंग टू सेक्शन, then what will be the first rod ka? Tell me. This is a rod, magnetic field. This is a rod about this fixed end is rotating with angular velocity omega. So velocity is rod में velocity downwards. Okay, this is naam A, this is O. Tell me, VA is positive, VO is positive. Tell me, magnetic field is inwards, velocity is downwards, and the positive direction is VO, right? And this rod ka is rotating with angular velocity corner se rotate ho raha hai. We can use the formula, right? So what is the formula? VO minus VA, because the higher term, higher minus lower, right, is equal to, tell me, B omega. L is what here? L is L only. L square by 2, right? ये तो क्या है? एक छोटा सा रॉड का. नाउ सेकंड पार्ट का ले लेंगे. सेकंड पार्ट का is a rod, fixed end. This is omega. This is O. This is C. Now it is going ऊपर जा रहा है ना, so velocity is like this. Now which one is more? Magnetic field velocity O is more. So VO minus VC is equal to, since it's rotating at the end only, we can use the formula B omega. L square is how much? 3L L square is 9L square by 2. Now I want VA minus VC. मतलब what I will do? I'll subtract second equation minus first equation. देखो VO minus VO cancel, minus VA minus of minus VA. So that's but VA minus VC is equal to this minus this. So कितना होगा? minus 2 क्या तो 7 B omega L square by 2. Yeah. 2 A भी 2 है ना? Okay. 8, right? 8 omega square. So 2 to 4, 2 4 8. So 4B omega L square. भाई डिनोमिनेटर दोनों सेम है ना, आपको न्यूमरेटर सेपरेट करने का. So 9 minus 1. So 8B omega L square by 2 cancel, 4B omega L square. समझ में आया? बीच में समवेयर है तो भी आपको कट करके चेक कर सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर सेक्शन चाहे बोल तो इंटीग्रेट करो, ऐसा करने का. रोटेटिंग रॉड का नेक्स्ट सपोज मान लो रोटेटिंग रॉड ऑफ ए आर्बिट्ररी शेप. इट इज नॉट रॉड, सपोज सम एनी सर्किल, सेमी सर्किल, ऐसा कुछ शेप है. सो उस टाइम में क्या करेंगे? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? इफ इट इज रोटेटिंग एट द एंड ऑफ द रॉड से फॉर्मूला क्या है? बी ओमेगा एल स्क्वेयर बाई 2. एट द टाइम एल के जगह में टेक डिस्प्लेसमेंट लेंथ, लेने का, खत्म. सो इजी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट लेंथ याद तो एनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. Suppose a wire is in the form of semicircle, is rotating of radius r. इसका radius is r. Okay, magnetic field is inwards, is rotating about this omega. Rotate हो रहा है. Okay, the axis is normal to the plane. The wire is immersed in a uniform magnetic field parallel to the axis. Find the induced EMF between O and P. Okay, this is O. The O and P का बीच में I want the EMF induced चाहिए. So it is in the form of semicircle. हम लोग को semicircle जरूरत नहीं है. So EMF का is rotating at the end only, right? It is rotating at the end.
दैट्स व्हाई आप सिंपली आपको क्या करेगा, टेक द डिस्प्लेसमेंट लेंथ ओनली. डिस्प्लेसमेंट लेंथ मींस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट लेंथ. दैट मींस इनडायरेक्टली देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड and rod is there, P and O, and rotating with angular velocity omega. एक rod है, rotating with angular velocity omega. Okay, इसका total length is how much? R and R, 2R, and moving downwards velocity. Now what is the formula इसका? Because total length है, corners rotate हो रहे, we can use the formula. So EMF formula is B omega L square. L square is L is nothing but 2R, right? 2R whole square by 2. So EMF is equal to 4B omega R square by 2. So 2 to cancel. So EMF is 2B omega R square. This is answer. समझ में? So motional EMF का done. Motional EMF का topic done. Okay. Topic understanding का? चलो. Now next topic is induced electric field. We left with induced electric field, self-induction, mutual inductions. Katam. Chapter done. Okay. Induced electric field. Induced electric field is very small topic. Easy, एक छोटा सा फॉर्मूला है, बट अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट. देखो इसमें क्या होगा, ये वाला देखो, वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन क्लास. ओके, यू टेल मी दिस इज अ कंडक्टर. सपोज मान लो, आई लास्ट वन क्वेश्चन, टेल आंसर फर्स्ट. सो दिस इज अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट्स. When the magnetic field is increasing in the inward direction, tell me which direction the current is produced. Which direction the current is produced? Clockwise or anti-clockwise? Look. When the magnetic field is increasing in the direction, who has given Pune? Or बोल सकते हो? Which law is given this direction of current? Direction of current बोलो इसका. When the magnetic field is increasing in the inward direction, which direction the current is getting induced? Which law? Lenz's law. देखो my students, बोलो आंसर बोलो. हाँ, tell. Anti-clockwise. हाँ, ये वो एक ही लड़की बोलने का, दूसरे उसका आम में बैठेगा ना. ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय लेंस लॉ. लेंस लॉ सेज द करंट इंड्यूस्ड इज ऑलवेज अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इज प्रोड्यूस्ड. Okay. Now the question is how the current is produced. How the current is produced. Faraday ने क्या बोला? Whenever there is a change in magnetic flux, current is induced. But here question is how? How current is induced? उधर तो पढ़ लिया, current is induced बोलते okay sir, current is induced, okay done. But how? Why current is getting induced? Tell me. Why current is getting induced? Anybody? हाँ, श्रीराम कुछ ट्राई करेगा, बोलो. Okay, देखो, current is flowing in the wire means nothing but I can tell positive charges are flowing in the wire. Positive charges are flowing. Initially, conductor is at rest, the charges are at rest. Charge is not moving. Okay. You know, rest charge के ऊपर magnetic field can make any force can act, tell me. When the charges are at rest, the magnetic field cannot apply any force. Because आपको moving charges and magnetism में lesson का नाम only moving charges. Charges at rest means there is no force acting on the charge. Magnetic field cannot apply any force. Only moving charges को apply करेगा. Then आपको charges at rest है, only magnetic field is increasing, but still the charges are start flowing. But who is pushing? अगर charges start flowing, अगर पता चलेगा तो then only current will flow. Who is pushing the charges? Who is pushing the charges? That's what. Tell. Who is pushing charges? Electric field. So क्या होगा generally? We studied this one, याद है?
इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर प्लस क्यू चार्ज इज देयर, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई इन द सेम डायरेक्शन, माइनस क्यू तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई एक्ट होगा. दैट मीन्स हियर आपको इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. उस इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन होगा, इन द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ करंट. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट नेम ऑफ दैट ओनली, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. समझ में रहा है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग द चार्जेस टू फ्लो, उसके वजह से द करंट इज प्रोड्यूस्ड. फैराडे ने उधर तक ही बोला, बट थोड़ा आगे आने के बाद दे अंडरस्टूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनडायरेक्टली. सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यही कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऐसा रहेगा. ओके, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, whenever there is a change in magnetic field, the electric field is induced, because of that the current is produced. That is the concept. Okay, so whenever magnetic field is changing, an induced electric field is produced in any closed path. And ये electric field is not same as that of electrostatic electric field. वो अलग है, ये अलग है, ये थोड़ा प्रॉपर्टीज का अलग है. It is not electrostatic electric field नहीं है, ये induced electric field है. This will be produced not because of charge, this is produced because of change in magnetic field. Okay, so this induced electric field अलग है उसका. Okay, लिखो. सो नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव चार्ज से आएगा, नेगेटिव चार्ज से एंड हो जाएगा. बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स ए क्लोज लूप, इट फॉर्म्स ए क्लोज लूप. किधर है वो लूप फॉर्म हो जाएगा, सब क्लोज लूप फॉर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, ओके, देखो, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड वी स्टडीड इन कूलम्स लॉ. दैट इज डिफरेंट है. अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, द लाइंस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज्ड लूप. ये कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म होगा. ओके, सो जस्ट नाउ वी स्टडीड इट. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में ऐसे इंड्यूस होगा, क्लोज्ड लूप फॉर्म होगा. इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप. ओके, सो किधर भी कंडक्टर होता है उधर पूरा क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड है. बट नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, प्लस क्यू से जाएगा, माइनस क्यू से एंड हो जाएगा. दैट्स इट. सो ये तो फिर से पीछे नहीं आएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू नहीं आएगा, बट इधर दे फॉर्म्स अ क्लोज लूप. डिफरेंस इसका. डन. ओके, चलो. नाउ you tell the answer. An inward magnetic flux is decreasing. So here magnetic field is decreasing. Which of the following best represents the induced electric field? Which of the following represents the induced electric field? Magnetic field is decreasing in the inward direction. So definitely magnetic field is changing. Therefore, current is getting induced. Current direction only, the magnetic field, electric field direction will be there. Sir, A. A. Yes, A is answer. So magnetic field is decreasing. उसको क्या करेंगे, लेंस लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए आपको क्लॉकवाइज करंट विल बी इंड्यूस्ड. सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर. इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप्स. ओके, नाउ इसका फॉर्मूला कितना, इसका फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला इज हाउ मच.
इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dl is equal to minus d phi by dt. This is the formula. E is called induced electric field. Okay, induced electric field. So how to find induced electric field? ये formula किसका? Tell me. E is equal to minus d phi by dt. Which formula? Which law? ये किसका? Instantaneous. नहीं, instantaneous नहीं है. Which law? Faraday's second law. Faraday's laws only. ये चैप्टर में एक ही लॉ है, Faraday's laws का ओनली पूरा पढ़ रहे हैं. ओके, सो EMF is equal to minus d phi by dt, and induced electric field is given as closed integral E dot dl is also equal to minus d phi by dt. मतलब क्या हो रहा है? Whenever there is a change in magnetic flux, the induced electric field is produced. That's why ये दोनों का relationship है. Okay, so problems करने समय हम लोग क्या करने वाले हैं? We have to find the EMF by using this formula, and we are trying to find EMF by using this formula. मॉड लगा के माइनस निकालेंगे, मॉड लगा के करने वाला है. दोनों को इक्वेट करके वी गेट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड यू नो फ्लक्स का फॉर्मूला B डॉट A. इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर वी शुड टेक इन सेम डायरेक्शन. वो सब याद है ना? चलो नो क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चंस. आईआईटी क्वेश्चन भी दूंगा एक क्वेश्चन. ओके, दिस इज अ फॉर्मूला एंड दिस इज वन ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशन. मैक्सवेल्स इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ने वाला है, तब आई विल टीच दिस वन. ओके, ओके चलो इसको न्यूमेरिकल करो. A square non-conducting loop 20 centimeters on side is placed in magnetic field. A square loop है 20 सेंटीमीटर है, एक साइड का स्क्वायर है. It is placed in under the magnetic field. The center of AB coincides with the center of magnetic field. Okay, इसका सेंटर एंड इसका सेंटर दोनों कोइंसाइड हो रहा है. Okay, the magnetic field is increasing at a rate. मतलब इनवर्ट डायरेक्शन में magnetic field is increasing. मतलब what is given? dB by dt is given as 2 Tesla per second. Magnetic field is increasing in this direction. The potential difference between B and C. B and C का potential difference find करेंगे. So potential difference find करने के पहले आपको क्या करेंगे? We have to find EMF induced. So कैसे यूज करेंगे? We'll use the formula. What is the formula? E is equal to EMF induced is equal to closed integral E dot dl is equal to minus d phi by dt, और मॉड में d phi by dt आएगा. Okay, first we'll take this one and try to find EMF. We'll take this one. Okay, so electric field, tell me इस डायरेक्शन में करंट किस तरफ होगा? फर्स्ट टेल में. इस whenever magnetic field is increasing, the current का direction is clockwise or anti-clockwise? Magnetic field is increasing in this rate. Huh? Anti-clockwise. Anti-clockwise direction. So electric field is also definitely in this direction only. Electric field is always perpendicular to magnetic field. This is the induced electric field, right? Okay. And dl we are taking a small in the same direction that of electric field only. dl will take a small length which is in the same direction that of electric field. Okay. So now electric field and dl are in the same direction, cos 0. So इसका क्या होगा? Closed integral E dl cos 0. Cos 0 is 1 and electric field is constant, बाहर आ जाएगा. E into dl addition of all the sides is nothing but, suppose मान लो A मान लो, लास्ट में शिफ्ट करेंगे. So what is the sides ऐड किया तो इंटीग्रल ऑफ dl ऐड करने से क्या होगा? 4A. This is the EMF produced, first equation. This is to the induced electric field का thing. Our intention क्या है? To find the EMF across B and C, potential difference across B and C. Okay. Now through Faraday's law से करेंगे. Through Faraday's law, ये स्टेप फॉलो करने का सभी प्रॉब्लम्स में. Faraday's law. Faraday's law से क्या है? E is equal to mod d phi by dt.
and mod d by dt of phi means ba. नो एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। किसका वी आर सीइंग फ्लक्स, किसका, इसका, राइट, इसका स्क्वायर का, बिकॉज फ्लक्स लाइंस उसमें फाइंड करेंगे, ईएमएफ उसमें फाइंड कर रहे हैं ना। सो बी ए इज कांस्टेंट, एरिया बाहर आ जाएगा, डी बी बाई डी टी। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी। दिस इज द ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द Faraday's laws. This is the EMF across, according to the definition of electric field. This is the EMF because of Faraday's laws. दोनों इक्वेट करो, दोनों इक्वेट करके फाइंड द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। सो E into 4A is equal to A square into dB by dt. So substitute the values now. एक A कैंसिल। नो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, कितना आएगा? A by 2. A per no, A is how much? 20 centimeters, right? 20 by 2, so 10. 10 ना? No, थोड़ा wrong. 0.1. 0.1. Electric field is 0.1. Okay, volt per meter. Okay. Now induced electric field आया. Now आपको क्या चाहिए? Potential difference between B and C चाहिए. We know the relation between potential difference and electric field. Anybody? Potential difference and electric field. Second chapter में electric potential and capacitance time में we studied potential difference between electric field. Delta V, mod delta V is equal to E dot dr. E dot dl. L, total length is L, right? L. Okay. Now initially electric field and length is in same direction, cos 0. So delta V is equal to EL cos 0. So substitute here. E is how much? E is 0.1 into length is 20 centimeters. 20 by 100. Because he is asking only potential difference across B and C only. So that's why that is length only I am taking. So kitna? 5 ja. So 1 by 50. Right? Volts. Is answer. So where the potential difference across the thing is 1 by 50 volts. So whenever magnetic field is changing, induced electric field का concept आपको use करना पड़ेगा. Otherwise, if I use only EMF का find कर बोल तो d phi by dt में आपको इधर आपको क्या क्या मालूम है, और सब EMF आ जाएगा, but you don't know the potential difference. Induced electric field चाहिए compulsory, right? चलो एक करो देखते हैं. This is IIT question. The magnetic field is within the cylindrical region. Magnetic field inverts है within the cylindrical region, whose cross section is indicated starting increasing at a rate of alpha Tesla per minute. मतलब dB by dt they given as alpha Tesla per second. The graph showing the variation of induced electric field. This is induced electric field versus distance. The graph, which graph is right? Is asking. Induced electric field versus distance. So since induced electric field versus distance, we have to find induced electric field. Okay, in this case में कौन सा देखो, this is Kepler. Okay, this is all Kepler. मतलब हम लोग को कैसे 3 केसेस में फाइंड करना पड़ेगा. One is this R, right? One is छोटा R ले लो, less than point में try to find induced electric field. And one is outside ले लो, and surface में we can find. Okay. So we will try to find the first inside the electric field, induced electric field कितना है. We are trying to find inside. Then only graph मालूम पड़ेगा ना. This is less than R वाला, right? Less than R, less than R, less than R we are seeing. Okay. चलो. So first case, smaller is less than R. Okay. So we are taking here. Okay. मान लो here imaginary surface is there, conductor मान लो. Okay. Now electric field किस तरफ होगा? Tell me first of all. Current direction किस तरफ होगा? Electric field किस तरफ होगा? Tell me. Electric field forms a closed loop, right? Which direction होगा? Magnetic field क्या हो रहा है? Increasing या decreasing? Increasing inside.
So current will be in a anti-clockwise. Anti-clockwise means electric field is also in the anti-clockwise direction. So this is an electric field. एंड हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करने वाला है. सो ईएमएफ इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल. सो इनिशियली डीएल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, cos 0 आएगा, ई विल बी कमिंग आउटसाइड, डीएल 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 मिल गया तो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल कितना होगा 2 pi r is equal to EMF induced. Okay, now same way you have to use Faraday's laws, because then only we get the induced electric field correctly. Okay, now Faraday's laws का use करो. Faraday's laws क्या है, EMF is equal to mod d phi by dt. So phi d by dt of phi is BA. Initially we are assuming दोनों same direction cos 0. So here which is changing, area तो constant है, area will be coming outside dB by dt. Okay, एरिया वाला हमें कौन सा एरिया लेने का, here which area we should take, we are trying to find EMF across this loop only, right? This loop only, smaller distance, right? So इधर एरिया कितना होगा, pi r square is equal to pi smaller square times dB by dt. Now second question. Now ये तो Faraday's laws के हिसाब से आ रहा है, ये वाला इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से EMF इंड्यूस्ड, तो दोनों सेम है. सो इक्वेट दिस टू, तो कितना होगा, E into 2 pi r is equal to pi r square dB by dt. तो एक r कैंसिल, pi कैंसिल, सो E into 2 is equal to r into dB by dt is nothing but alpha. So E is equal to r alpha by 2. So from this I got an electric field, induced electric field is proportional to r. So which one we can eliminate? Less than r में E is proportional to r. Which one we have to eliminate? So B and D. P and D we can eliminate, right? Because देखो ये straight line है, straight line है, देखो ये ऐसा आने का, ऐसा आने का, right? Now आपको आंसर आने के लिए क्या करेंगे, आउटसाइड फाइंड करो. सेम मेथड करो, आउटसाइड देखते हैं, टेल आंसर. पहले एक करो, सेम मेथड में आउटसाइड ले लो, r इज ग्रेटर देन कैपलर. तो हम लोग क्या करेंगे, आउटसाइड ले लेंगे एंड ट्राई टू टेल द आंसर. r and taking outside r. So definitely induced electric field will be in this direction, and same thing electric field dl are in the same direction. Try to find EMF and Faraday's से find करो. So first one तो same है, EMF is E into 2 pi r only will be there, same. Second one करो. Option A. Yes, perfect. IIT 2000 में आया था ये वाला. Okay, सेम मेथड फल को, एंड इसका E इंटू कितना आएगा, 2 pi r आएगा ना, कैपिटल r आएगा.
इसका when you are doing outside में E into 2 pi r is equal to pi r square. E into 2 pi r is equal to pi r square alpha. Pi r square alpha. So by equating, we'll get pi capital R square alpha, right? So by equating, what we'll get? This two smaller. So कितना है expression finally? E is equal to r square alpha by 2r, ऐसा है? Inverse relation है. So मैं श्रीराम same method I'm doing directly. आपको when you take outside ले तो same E dot dl dl मिल गया तो पूरा टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल E into 2 pi r डाल दिया इज इक्वल टू फैराडेज लॉस के हिसाब से E is equal to mod d phi by dt. So phi is ba. So b तो अल्फा आएगा. एरिया कौन सा यूज करेगा? एरिया वी हैव टू यूज ओनली दिस वन इनसाइड वाला because flux will passing only to that one, right? So pi r square आएगा, capital R square, pi r square times dB by dt is nothing but alpha. Now solve किया तो we'll get this one. So if you see carefully, E is inverse proportional to 1 by r. Inverse relation will be like this. इधर तो नहीं है, बाहर नहीं है. So this answer. So आपको relationship find करने के लिए we have to use this one. चलो last question करो. करो. Now magnetic field is changing with respect to time. Cylindrical R is given as shown. The induced electric field at t equal to 2 seconds. I want induced electric field at t equal to 2 seconds. Options are given. You can tell. The induced electric field के लिए what is the formula? E is equal to closed integral E dot dl is equal to minus d phi by dt. Okay. So ये तो बाद में करेंगे वाला. Just d phi by dt find करो at t equal to 2 seconds देखते हैं. Phi is nothing but mod find करो. D phi by dt. So phi is BA, right? D by dt of BA. So एरिया बाहर आ जाएगा. dB by dt करो. Differentiate and substitute t equal 2 seconds. First. So 0. 0. So ये पूरा 0 हो जाएगा. So therefore EMF induced is 0. That means induced electric field is 0, right? That means क्या होगा? No electric field induced in this case. Okay. Sure. Now we'll write the important points. Heliko, important points regarding the induced electric field. Induced electric fields are not created by point charge. Point charge से create नहीं होगा. Change in magnetic field के वजह से create हो रहा है induced electric field. And induced electric field is non-electrostatic and non-conservative. Options में डायरेक्ट दे सकते हैं. Assertion reasoning में they'll give this type of questions. Small questions. People को कॉपी करो. ओके. नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे.
ओके चलो, नाउ एडी करंट्स स्मॉल टॉपिक है, सुना होगा ना एडी करंट्स बोल के, नहीं सुना? अरे ओके, एडी करंट्स क्या है दिल से देखो, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, circulating currents are induced within the body. Just now we told, right? Whenever a conductor is placed inside the coil, क्या होगा? Induced electric field के वजह से circulating currents are produced. That circulating currents को we called as eddy currents. Okay? उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. This is through Faraday's laws. Faraday's laws say the current is getting induced, and because of induced electric field, the current is circulating. Circulating currents are produced. एंड वो आपको ट्रांसफॉर्मर कोर्स में वगैरह में मिलेगा. आपको ट्रांसफॉर्मर कोर विल बी देयर, ट्रांसफॉर्मर पढ़ने समय समझ में आएगा. हियर वाइंडिंग विल बी देयर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी देयर. हियर आई एम गिविंग द सप्लाई वोल्टेज, सो करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द वायर. उसके वजह से देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लिंक्ड विद दिस कॉइल. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज लिंकिंग टू द कॉइल. ओके, इज द करंट प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, but inside the core also we are getting a circulating currents are produced, because this is also conductor. circulating currents are produced. उसके वजह से बहुत हीट हो जा रहा है, लॉसेस, हीट लॉसेस आर हैपनिंग. उसका इंसुलेशन डैमेज भी हो जा रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम. बट अवॉइड दिस एडी करंट्स. हमारा फंक्शन क्या है? जस्ट ओनली ए ट्रांसफॉर्मर करने समय समझ में आएगा आपको. इसका करंट इज चेंजिंग, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंजिंग, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी लिंक्ड with this coil, and according to Faraday's laws, the current is in the coil. Okay, तो देखो इसका theoretical है, there is no formula in eddy currents का. Okay, effects of eddy currents देखो, heating effect हो जा रहा है, energy is dissipated as heat हो जा रहा है. एंड दूसरा मैग्नेटिक डैम्पिंग होगा. एडी करंट्स अपोज मोशन, प्रोड्यूस रेसिस्टिव फोर्स, लाइक अपोजिशन विल बी क्रिएटेड some conditions में. We will see that, like meter, mana moving coil galvanometer में opposition also will be coming because of this eddy currents के वजह से. तो डैम्पिंग समझ में आया ना? सपोज मान लो दिस इज टू पोल्स आई एम पुटिंग, नॉर्थ पोल साउथ पोल. एक पेंडुलम का एक प्लेट को मैं ऑसिलेट कराऊंगा, इधर उधर उधर ऑसिलेट करा रहा हूँ. सो क्या होगा? ऑसिलेट करने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इसका ये ऑसिलेशन का कम हो जाएगा एंड जीरो स्टेबल हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जा रहा है. तो क्या होगा? देयर इज ए करंट इज प्रोड्यूस्ड, एंड बिकॉज ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सो घूमता जा रहा है. करंट, सर्कुलेटिंग करंट्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड हियर इट विल एक्ट लाइक ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट? उसके वजह से क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट होगा, उसके वजह से धीरे रुक जाएगा. ये ऑसिलेटिंग करने समय धीरे धीरे ओके रुक जाएगा, बिकॉज रेसिस्टिव फोर्स इज एक्टिंग इनडायरेक्टली. ओके, डैम्पिंग हो जा रहा है. नो, इसको अवॉइड करेंगे. उसको अवॉइड करने के लिए then circulating currents will be reduced. समझ आ रहा है? So how to reduce? We'll see. Copied? Copied? चला? Yeah. देखो. So the Ways last to reduce. so the last bit that you explained, it wasn't audible. English I'll explain. Ways to reduce unwanted eddy currents using laminated cores in transformers, motors, and dynamos. Or lamination increases resistance, reducing the path of eddy currents. आपको ट्रांसफॉर्मर कोर में we should not use one solid block. We have to cut into like thin laminations and then we have to attach करने से क्या होगा? सर्कुलेटिंग 3 डायमेंशन में नहीं जाएगा, ओनली एट देयर ओन हाउस में घूमेगा सर्कुलेटिंग करंट्स. तो उसके वजह से थोड़ा रिड्यूस होगा, पूरा एलिमेंट को नहीं कर सकते, थोड़ा रिड्यूस होगा. ओके, बाय यूजिंग लैमिनेशंस. सो एग्जांपल आई विल शो यू. देखो, इफ आई यूज लाइक सॉलिड ब्लॉक,
क्या हो जाएगा, ये पूरा 3 डायमेंशन में पूरा सर्कुलेटिंग करंट होगा, इधर उधर उधर सर्कुलेटिंग करंट होगा। उसको क्या करेंगे, कोर को लैमिनेशन करेंगे। यू कैन रिमेंबर लाइक वन पनीर पीस को मैं ऐसा ऐसा लैमिनेशन करूंगा। उसके वजह से क्या होगा, द सर्कुलेटिंग करंट्स विल बी इन देयर ओन ओन प्लेस में। उसके वजह से 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में वाला में हीटिंग इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, this is the way we have to reduce this laminated cores in transformers and motors we are using. Khatam, eddy current done. We left with only self inductance, mutual inductance. So maximum tomorrow self inductance हो जाएगा, mutual inductance we will try to start.